अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड योर most of our topic related to the research methodology. Uh, this might be the ending type of topics that we are going to touch, we are going to talk. So generally that हमें प्रपोज़ल जो है रिसर्च प्रपोज़ल आज हम उस पर बात करेंगे कि व्हाट स्टेप हैव टू बी टेकन और ये क्या है, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट पर्टिकुलरली क्या होती हैं। तो जो प्रपोज़ल है एक इज़ व्हाट अ प्लान और सजेशंस especially a formal or written one put forward for consideration by others. A research proposal is a document that outlines how you propose to undertake your research studies. Now that इसके कंटेंट जो हैं जो हो सकते हैं, व्हाट इज़ रिसर्च, व्हाट इज़ प्रपोजल, हम बताएंगे आज की ये लेक्चर की। बेसिकली डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल, टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल, importance of research proposal, advantages of research proposal, relationship of research proposal with researcher, component of research proposals. These components have been given: title, introduction, statement of problem, review of related literature, hypothesis, so purpose, objective of study, work plan, method, research design, sample, references, and common error in research proposal, evaluation of research proposals. Question is, what is research? Dear students, the systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish facts and reach a new consideration. So once we talk, it's a systematic one, it is a scientific, based upon some rule and regulation, and some defined steps would be involved there. So that's why this is basically called the systematic investigations. Proposal, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, plan or suggestion, especially a formal or written one, put forward for the consideration by others. Definition of research proposal is what a research proposal is a document written by a researcher that provides a detailed description of the proposed program. It is like an outline of the entire research process that gives a reader a summary of the information discussed in a project. तो इन फैक्ट हम जब अगर बात करें कि हमारी जो हम जब अपना प्रोजेक्ट जब करते हैं, जब थीसिस लिखा जाता है, तो उससे पहले हम अपनी प्रपोज़ल लिखते हैं और उसमें हम गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि हमारी रिसर्च का पैटर्न क्या होगा. दैट्स वाई दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट वन. Importance of research proposal में such points can be highlighted. It helps examine what the researcher intends to do. Research proposal can serve as a document of a contract for the projects. Research proposals can be effective starting places to discuss projects with their professors too. The research proposal is able to give an overview of the research project so that other people understand the scope of research, the significance of research, as well as your proposed methodology and chosen research method. तो आई थिंक इसमें जो proposed methodology mean के those method which to be taken, like which one your population, which one your sample, which method to be used, which is the data to be used, either primary, either secondary, and if primary, how data to be collected, if secondary, which source would be used. So ladies and gentlemen, such is the plan that you are showing in your proposal.
this is the important. So far as advantages are concerned of the research proposal, so you sorry, this is not a fund, rather to find to support your research, allow you to review and critically evaluate your current research program, convince yourself and others that your research is worth supporting, keep you focused on your research program, develop novel ideas during a written proposal. So it's a sort of guidelines, इवन आपके फंड सपोर्टिंग, कितने फंड एलोकेट करने हैं, और आप फोकस्ड होते हैं, चूँकि दिस इज़ सॉर्ट ऑफ रोड मैप. Coming to the relationship of research proposal with research, ladies and gentlemen, हम अगर देखें तो रिसर्च प्रपोजल इज़ अ प्लान एंड रिसर्च इज़ एक्शन. चूँकि हम इस प्लान है, जब हम उसे करते हैं तो वो एक्शन है. रिसर्च प्रपोजल इज़ कंपल्सरी फॉर अप्रूविंग प्रपोज्ड रिसर्च. रिसर्च प्रपोजल इज़ अ शेड्यूल एंड रिसर्च इज़ एक्टिविटी. रिसर्च प्रपोजल इज़ अ मिरर ऑफ रिसर्च. मीन के आप जो रिसर्च होनी है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी प्रपोजल में. Research proposal is a blueprint of research. Here the blueprint means the detail of your research is exhibited and shown in the research proposal. This is engineering term, ladies and gentlemen. और जब हम उनकी जो ड्राइंग्स होती हैं, डिटेल जो काम होता है किसी भी प्लान का, वो दैट इज़ कॉल्ड इट्स द blueprint. Research proposal can serve as a document of contract for the projects. Now, I think the types of research proposal, there are two major types of research proposals. Naturally, it is internal research proposal, it is external research proposal. Simply, अगर कोई proposal within कंपनी के अंदर उनकी मैनेजमेंट के जो लोग हैं, वो इन्वॉल्व लोग अगर कोई प्रपोजल तैयार करते हैं तो डियर वो इंटरनल है. और अगर हम बाहर से किसी एक्सपर्ट, स्पेशलाइज्ड, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को अगर हम हायर करें तो दैट वुड बी कॉल द एक्सटर्नल रिसर्च प्रपोजल. Now I think internal research proposal normally is academic research proposals, non-academic research proposal. Academic research proposals is just like as university students are doing in order to search on a certain area. For example, learning के ऊपर हमने काम करना है, साइकोलॉजी के ऊपर, एबनॉर्मल साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है, तो naturally this would be called the research proposals. So far as external research proposal is concerned, this sort of research proposal is called the solicited research proposal and unsolicited research proposal. So far as solicited and unsolicited is concerned, solicited mean के जिसके लिए कंपनी खुद रिक्वेस्ट करती है. जैसे हमारा प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं, तो हमने किसी पार्टी को हायर किया, उनको हमने कहा कि डू प्रिपेयर अ रिसर्च प्रपोजल. दैट एनी प्रपोजल विच वुड बी मेड बाय पार्टी upon the request, upon the demand of someone, so this would be called the solicited. Unsolicited research proposal जिसमें कंपनी जो है उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन वो कंपनी है बाहर की पार्टी और वो अगर प्रपोज़ल बना के देती है बग़ैर पैसों के, बग़ैर रिक्वेस्ट के, तो लेडीज एंड जेंटलमैन such sort of proposal would be called the this is unsolicited proposals.